Yes, good morning children. So today we are going to study about potentiometer, right? So before we study about potentiometer, let us differentiate between a voltmeter and a potentiometer. So the basic definition, the layman definition of potentiometer says that potentiometer is a device which is used to calculate the EMF of a cell, which is used to calculate the potential difference, right? So what we do using a potentiometer, we measure potential difference or EMF of a cell, right? But we already have a device whose name is voltmeter. Voltmeter का क्या काम है? Voltmeter measures the potential difference between any two points. Then when we already have voltmeter which is used to calculate the potential difference, then what is the need of one more such device that is also used for calculating the EMF of the cell and calculating the potential difference? So we will understand this difference कि potentiometer क्यों चाहिए जब already हमारे पास voltmeter है, right? What is the need of having one more device for the same purpose? That we will understand, and then we will start with the potentiometer. So let us assume that there is a circuit and the circuit is having 100 ohms resistance. Leave everything all, focus on this. So suppose there is a circuit in which 100 ohm are connected and it is carrying a current of 5 ampere. So यहाँ से हमने बोला A point से B point तक 5 ampere current pass हो रहा है and the potential is the resistance is 100 ohm. और मेरे को ये A और B point के बीच में I want to find how much is the potential difference. So we know the formula, potential difference is IR. So potential difference should be 5 into 100. So what is the true potential between A and B? True potential is 500 volt, right? अभी ये 500 volt है, ये चेक करने के लिए मैंने एक डिवाइस लगाया. Its name is voltmeter. So I have connected a voltmeter here, right? Voltmeter here. Voltmeter measures the potential difference. लेकिन वोल्टमीटर के खुद के ऑपरेशनल होने के लिए, खुद के फंक्शनिंग के लिए इट विल ड्रॉ सम करंट. सो यहां से जो 5 एम्पेयर आ रहा था, राइट डाउन ए हियर. सो 5 एम्पेयर करंट हम यहां पे सेंड कर रहे थे, राइट? वी वर सेंडिंग 5 एम्पेयर. इस 5 एम्पेयर में से यहां पे समझो चला गया 1 एम्पेयर, बिकॉज Kirchhoff's law we have studied now. Now we can apply Kirchhoff's law. ये जंक्शन है, इनकमिंग करंट 5, वोल्टमीटर के अपने फंक्शनिंग के लिए इट विल ऑल्सो ड्रॉ सम करंट. सो यहाँ पे हमने बोला 1 एम्पेयर करंट इसने यूज कर लिया, राइट? और 1 एम्पेयर करंट यूज करने के बाद यहाँ पे कितना करंट, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट. 5 आ रहा था, 5 में से 1 उधर चला गया, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है? 4 एम्पेयर. नाउ वोल्टमीटर विल शो अस 4 into 100, that is 400 volt, which is not the correct reading. Are you getting? Whenever you are connecting voltmeter between two points, it draws some current from the main current for its own operation. खुद के functioning के लिए voltmeter will draw some current, and because voltmeter will draw some current, it will not give you the accurate value of voltmeter, right? So when it does not gives you accurate value, then why do we use voltmeter? Yes, because voltmeter is very convenient to use. Voltmeter को यूज करना बहुत ही कन्वीनियंस है. एक एंड पॉजिटिव से लगाया, एक एंड नेगेटिव से लगाया, और किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको इजीली मिलता है. एंड फॉर आवर कन्वीनियंस व्हाट वी डू, जनरली ऑल द वोल्टमीटर्स हैव वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस. सो हम वोल्टमीटर को जब डिजाइन करते हैं तो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, राइट? बहुत हाई होने की वजह से वो बहुत थोड़ा सा करंट लेगा. सो हमने इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज कर दिया. बहुत इंक्रीज करने की वजह से अभी समझो ये 1 एम्पेयर की जगह सिर्फ 0.1 एम्पेयर लेगा. 5 में से 0.1 एम्पेयर ऊपर चला गया, रेस्ट इज 4.9 एम्पेयर. अभी 4.9 एम्पेयर से इफ आई कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ मच करंट इज पासिंग हियर? 4.9. Potential will be 4.9 into 100. So what is the value? 490 volts. Now, if we take a real good high resistance voltmeter, high resistance होने की वजह से वो बहुत कम current consume करेगा. Because it will consume very less current,
Hence we can say this is a better voltmeter. लेकिन क्या फिर भी वो आपको accurate value दे रहा है? No, it is not giving you accurate value. कुछ ना कुछ small amount of current it will definitely draw, and that is why for what purpose we use for what purpose we use voltmeter, because it is convenient to use, but it never ever gives you the accurate value. अगर यहाँ पे 500 true value है तो it is only showing you 490. Right? So, in order to get the accurate value of potential difference between any 2 points, we have manufactured a separate device which is termed as potentiometer. Right? So, अगर हमें 2 points के बीच का A और B के बीच का accurate potential difference चाहिए, तो we should take some device which is a zero current instrument. मतलब जो अपनी फंक्शनिंग के लिए कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं करे, अगर वो कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं करेगी, देन यू विल गेट 500 वोल्ट्स एग्जैक्टली. सो ड्यू टू दिस नीड वी हैव डिवाइज्ड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर इज अ जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट, राइट? इट विल नॉट कंज्यूम एनी करंट फॉर इट्स फंक्शनिंग, right? When it is not consuming any current for its function, then how is it working? That we will learn in today's lecture, right? So potentiometer is a device which is used to measure the potential difference or EMF of a cell, a potential difference between 2 points or EMF of the cell accurately. It gives you the precise reading. बिल्कुल भी कुछ भी difference नहीं होगा true value में और accurate value में, right? True value में और calculated value में it will be a precise, it will give you a precise reading. So that is why we use potentiometer, right? So before we understand potentiometer, we need to understand the relation between the potential and the length, right? So we have also learned that in any cell, for a cell is the EMF, cell is the source for any setup, for any circuit, cell is the source of energy. Every cell has some internal resistance, and due to internal resistance we get the terminal potential difference V less than the EMF of the cell until you are not charging the cell. That we have already discussed, right? So very simple circuit I am